Good morning, students. Today we are going to discuss the nitrogen cycle. Nitrogen is essential for the plants. The nitrogen compounds converted into proteins. The nitrogen cycle is essential for the crop production. Right? Now, nitrogen fixing. Actually, there are so many bacteria which help to fix the nitrogen of the soil, right? So bacterium rhizobium, this rhizobium you should remember is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants like peas, beans. Means the pulse plants are called leguminous plants. So the bacterium rhizobium fix the nitrogen in these plants. Rhizobium bacterium lives at the root noodles of the leguminous plants. तो इसके जो प्लांट्स होते हैं लेग्यूमिनियस प्लांट जैसे बीन्स, पीज, पल्सेस जो भी हैं, वहाँ पे एक छोटे छोटे से रूट्स पे बॉल्स होती हैं, उन्हें कहा जाता है रूट नोडल्स, राइट? तो rhizobium bacterium stay in the root noodles of the plant and it fixes the nitrogen. You know that the atmosphere is full of nitrogen, 78% nitrogen in the atmosphere, right? So the root noodles having the rhizobium bacterium which convert this nitrogen into nitrogenous compounds. And sometime the nitrogen get fixed by the action of lightning. Atmospheric lightning fix the nitrogen in the soil, right? But the amount of nitrogen in atmosphere remains the same. Since there is a cycle, the nitrogen is converting into the nitrogenous compounds, and then it also releasing from the soil to the atmosphere. So the amount of nitrogen in atmosphere remains the constant. Now we are going for the nitrogen cycle. Now this is the nitrogen cycle. This is atmospheric nitrogen. It is going to the soil in this manner. First we will discuss this cycle. Atmospheric nitrogen. The nitrogen fixing bacteria means the rhizobium fix the atmospheric nitrogen, right? Now the bacteria turn it into the nitrogenous compounds, nitrogen converting into nitrogenous compounds, है ना? तो नाइट्रोजन के नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बना लिए. ये काम कौन कर रहा? बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देन इट गोज टू द soil in the form of compounds. तो अब ये नाइट्रोजन का कंपाउंड बन गया जो सॉइल में चला गया. फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बैक्टीरिया ने फिक्स करा, फिर इसको टर्न कर दिया गया, इसे कन्वर्ट कर दिया गया नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में. अब यहाँ ये जो है सॉइल में नाइट्रोजन के कंपाउंड चले. एक रास्ता तो ये है. दिस इज द वन फर्स्ट. सेकेंड वन, ये जो एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, उससे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के थ्रू जो है सॉइल में आ जाता है ना. ऊपर से लाइटनिंग हुई और जो एटमॉस्फेरिक की नाइट्रोजन थी वो सॉइल में चली गई. अब इस नाइट्रोजन का नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को प्लांट्स इनटेक करते हैं, प्लांट्स लेते हैं सॉइल से नाइट्रोजन को, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को ये प्लांट ने अपटेक कर दिया. अब उस प्लांट को एनिमल ने खाया या ह्यूमन बीइंग ने खाया, ठीक है? तो एनिमल ईट्स द प्लांट. नाउ द एनिमल और ह्यूमन बॉडी हैविंग द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, राइट? तो द एनिमल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट कन्वर्ट्स goes to the earth and it again come to the soil.
अब वो जमीन में आ गया, मिट्टी में आ गया। देन अगेन दिस वेस्ट फुल ऑफ नाइट्रोजन may be again take by the plants in some of the proportion। और ज्यादातर क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन अब सॉइल में आ गया है वेस्ट के थ्रू, ये फिर बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हम नहीं करते, बैक्टीरिया माइक्रो, और फिर ये नाइट्रोजन गैस जो है कहाँ चलेगी, एटमॉस्फेयर। तो दिस साइकिल्स कंटिन्यू। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो सॉइल में चली जाती है इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, फिर उसको प्लांट लेते हैं, प्लांट को खाता है एनिमल या ह्यूमन बीइंग, फिर उसका जो वेस्ट होता है वो अर्थ में चला जाता है यानी सॉइल में चला जाता है, फिर बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं एंड दिस साइकिल कंटिन्यूस। सो द अमाउंट ऑफ this nitrogen in atmosphere will remain the same. So this is the nitrogen cycle, right? Now we can see one of the animation for understanding the nitrogen cycle. Now see this animation. Plant have no entry for the nitrogen. So first of all, nitrogen need to convert into the nitrogenous compounds. Now this nitrogen is going to the root of the pulse plants. Leguminous plant roots having these nodules. Now this is the bacteria. This is rhizobium bacteria. Nodules of pulse's root, it remains. Now nitrogen, atmospheric nitrogen, it is converting it into the ammonia. First of all, nitrogen converts into ammonia, NH3. Now this ammonia will be converted into nitrites and nitrates. These are other bacteria, nitrifying bacteria. Now ammonia is converted into nitrites and nitrates, NO2 and NO3. Now nitrogen can also be fixed by the lightning. The lightning converts nitrogen and it goes to the soil. Now root of the soil intake these nitrates and it goes to the plant. Now plant converts it into the proteins. Now protein is essential and you know that pulses are rich of proteins. Now it intake by the plant and then it is eaten by the animal or human. Now its waste again goes to the soil. Now some of the part of ammonia, this nitrogen is again intake by the plants, other plants, and the remaining ammonia converted into nitrates. This is the part which intake by the plant, and the remaining is get converted into atmospheric nitrogen.
and again the quantity of nitrogen in atmosphere will remain the same. So it goes back to the atmosphere, right? So percentage of nitrogen in air remains same, that is 78%. So this is the nitrogen cycle. Rhizobium, which converted into ammonia, then nitrifying bacteria converts into nitrates. By lightning, it also converted into nitrates, intake by the plant. Then it is eaten by the animals. Then its waste goes to the soil. It decays into ammonia into nitrates by the bacteria, and it again goes to the atmosphere. Thank you very much.